Hello everyone. So this week we have aldehyde, ketones and carboxylic acid. Here I am recording nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones, which is a very vast topic. Preparations we'll do in other video. First we are concentrating on nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. Okay, so for that reason I'm writing here that what is our main topic. Nucleophilic addition reactions on aldehydes and ketones. Okay, so nucleophilic addition reactions, देखो nucleophilic addition reactions and nucleophilic substitution, there is a basic difference. In case of additions, AN is the representation, we add nucleophile and nothing is lost from the molecule. For example, if I exemplify the same thing on any aldehyde, when any nucleophile attacks, it could be reversible, it could be irreversible, we don't know. Usually it is reversible, but there is no confirm. This bond always wants to revert. If in case incoming nucleophile is a weak nucleophile, it goes back and aldehyde is formed. If it is not, yes, by which can be by any treatment of acid, we call acidic treatment, and we get this type of product. Now, here RDS is this step in which there is addition of nucleophile and aldehyde. So if you see RDS, in RDS, sp2 hybridization is changed to sp3 hybridization. There is a change of hybridization from sp2 to sp3 plus nucleophile being a negatively charged attack on the del plus of this carbonyl. Correct. So in this reaction, the two factors which control nucleophilic addition reactions are first steric on carbonyl, that is with increase in size of alkyl groups on carbonyl, rate of nucleophilic addition decreases. And second is del plus on carbonyl. With increase in del plus on carbonyl, rate of nucleophilic addition increases. Usually both these factors go hand in hand, but yes, there could be somewhere कभी controversy हुई, तो usually del plus और इसमें बहुत ही close call होता है, we cannot say, तब वो database हो जाता है कि reaction कितनी होगी, क्या होगी, कैसी होगी. Anyways, due to all these factors, हम कह सकते हैं nucleophilic addition is fastest for formaldehyde, then it is for other aldehydes, then it is for benzaldehyde. Now see, benzaldehyde is a plus R group, then also it is better than acetone. Okay, and then it is for PHCOCH3, and then it is very bad for PHCOPH. So this is our nucleophilic addition order of reactivity. Order of reactivity is like this. Okay, this is how it behaves. Now, there are so many different types of nucleophilic addition reactions. Let us take one by one. First reaction we are taking is reaction with water. Now, reaction with water is aldehyde reacting with
water, it is completely reversible reaction. OHH positive, O minus. Then there is a proton exchange, H, OH like this. And then there is again a loss of H plus and aldehyde is formed. Okay, that is also a possibility. Or it can just be gem diol. यहाँ से वापस loss of H plus होगा तो वापस aldehyde बन जाए. That is a possibility. And in fact, this reaction normally has this type of K equilibrium. It is usually backward. ओके वाटर के साथ जब हम रिएक्शन लेते हैं नॉर्मली रिएक्शन इस तरीके से होती है. देयर आर ओनली वेरी फ्यू जो स्टेबल जेम डायोल बनाते हैं. देयर आर वेरी फ्यू विच कैन फॉर्म स्टेबल जेम डायोल. दे आर cyclopropanone due to relief of strain from sp2 to sp3. Second is formaldehyde. This forms large amount of gem diol. Okay, under aqueous condition, formaldehyde usually exists as gem diol due to very high del plus probably. CCl3CHO. Here the reason is entirely different. जो हम gem diol में कह रहे थे कि stability नहीं होती due to 4-member strain structure, वो यहाँ है ही नहीं. यहाँ 2 5-membered chelation. इसलिए it is stable. Fourth is something called ninhydrin. This is chloral. Fourth is something called ninhydrin. Okay. Water. Now this is the maximum del plus carbonyl out of the 3. है ना. बाकी दोनों जो हैं वो pH के प्लस आर से इन्फ्लुएंस होंगे. ये नहीं होगा और इसलिए इस पे सबसे ज्यादा डेल प्लस होगा. ठीक, तो ये निनहाइड्रीन हाइड्रेट बना यहाँ. निनहाइड्रीन हाइड्रेट. ओके, इस तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं. निनहाइड्रीन हाइड्रेट इज फॉर्म्ड. अब इसी सीरीज में एक फिफ्थ जेई में आया है, वो हो जाता है PHCO CO CO PH. This also forms stable gem diol like ninhydrin. इसमें भी कुछ उसी तरह की H bonding, कुछ उसी तरह का repulsion of the 3 carbonyls which can cause the stability of the gem diol. See? So ये बनाते हैं. So normal cases are these 5 which can form stable gem diols. Otherwise always the equilibrium goes backward. ठीक है, हमेशा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है, कम ही ये फॉरवर्ड जाएगा. बस इन्हीं 5 केसेस में. और इन 5 में भी अगर जरूरत पड़े तो अपन पीटर साइक्स रेफर करें फॉर कंपैरिजन ऑफ द अमाउंट ऑफ gem diol formed by them. Reaction number 2 is reaction with RSH. Or rather, let us take first reaction with alcohol. Now carbonyls, as we said, are having del plus. जब हम इसमें alcohols की reaction लेते हैं, for example this, we need reaction in presence of dry HCl. There should not be presence of water. So we use dry HCl. What we get is OH, OAT. This is called hemiacetal. If one more times same reaction takes place, then we get OAT, OAT and H. This is called acetal. When you are starting from
aldehyde. Okay, when you are starting from aldehyde, then the reaction is having hemiacetal and acetal. And when the reaction is starting from ketones, same reaction अगर हो रही हो इसी तरह से, ओके अगर हमारे पास कीटोन्स हैं और इसी तरह की कोई रिएक्शन हो रही हो जिसकी फिजिबिलिटी कुछ इस तरह की होती है, बहुत कम होगी ड्यू टू स्टेरिक, दिस इज कॉल्ड हेमिकीटल, this is called ketal, this is called ketal, hemiketal and ketal when you start from ketone. Okay, now what happens is, first let me write the mechanism. First let me write the mechanism for aldehyde. I am writing that in presence of H plus protonation, of course it is dry HCl, but automatically Lewis acid Lewis base behavior. Cl minus is a weak nucleophile, so we don't worry. Whichever alcohol is available, it attacks. It could be even phenol बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा. R H plus OH. Now either it is intramolecular proton exchange or it is loss. ये बन गया hemiacetal, which is unstable. Highly unstable, it always goes backward due to same intramolecular H bonding and strain in the ring. So again, अब ये जो प्रोटोनेशन होगा और कार्बोकेटायन बनेगा, ये पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल है. RC OET R पॉजिटिव. ओके, और फिर से ये ETOH यहाँ अटैक करेगा. OET R and ultimately OET plus H plus. देखो एसिटल्स आर बेसिकली ईथर्स, है ना. ये जो बना है ये एसिटल है. एसिटल्स आर gem diethers, okay, and hemiacetals are gem alcohol ethers. Acetals are stable. Acetals are stable, but hemiacetals are unstable. Okay, hemiacetals are unstable. They are stabilized. They are stabilized in case of intramolecular attack forming 6 and 5 membered rings. Example, glucose and fructose cyclic structures. In these cases, it forms cyclic structures which are stable. Okay, so biomolecules में ये stable होता है, otherwise it is unstable. It always opens and form a alcohol ketone aldehyde separate. Now in case of ketones, due to steric, normally it is difficult to form
कीटल्स, है ना, स्टेरिक की वजह से. but can be formed with diols, that is cyclic. इसका क्या मीनिंग है? इसलिए तुम हमेशा देखोगे कि कीटोन्स में CH2OH, CH2OH इनसे बनाया जाएगा, वही ड्राई HCl. ये एक अल्कोहल का काम ये करेगा और एक बार इंट्रामोलिकुलरली दूसरा. दीज आर स्टेबल. अब देखो, ईथर्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनरिएक्टिव, आर अनस्टेबल. ओके, तो उसका हम यूज करने वाले हैं. कैसे यूज करेंगे बताती हूँ. Acetals and ketals can be hydrolyzed back to aldehydes and ketones with the help of aqueous HCl. aqueous HCl की मदद से हम उसे वापस हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. Okay, so it's easy that you introduce a acetyl group and then you remove the acetyl group. This is why, okay, this is why acetal formation, acetal or ketal formation is used as a masking. Okay, it is used as a masking for carbonyl products, या for carbonyl compounds. इसका क्या मतलब है? मास्किंग का क्या मतलब है? मास्किंग हमने पहले भी पढ़ी है फिनॉल वगैरह में, दैट मास्क द पैरा पोजीशन. देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप है, लेट अस सपोज ये है, एंड नाउ द point is that reduce this to this alcohol. Okay, 1 degree alcohol. So हम आंसर लिखेंगे कि NaBH4 ले लो. Okay, इसको कन्वर्ट करना है हमें इसमें. Our answer could be NaBH4, but it is wrong, because if I take NaBH4, then this also will be reduced. फिर तुम बोलोगे PCC ले लो, तो दोनों अल्कोहल चली जाएंगे. So NaBH4 choice is wrong. So what we'll do is, solution क्या होना चाहिए? First हम करेंगे masking. Okay, first MeOH in dry HCl ले लो. So what will be formed is, यहाँ पर OMe OMe बन जाएगा. ठीक, फर्स्ट हम इस तरह का काम करेंगे. सेकेंड हम करेंगे इसके बाद NaBH4 और LiLH4. अब OMe बन गया. थर्ड विल राइट aqueous HCl. Okay, or you can even write dilute aqueous H2SO4, and this is regenerated. Okay, I hope now you have got the point that how to use masking, कि हमें जहाँ रिएक्शन को रोकना है कि बस रिएक्शन इतना ही हो, यहाँ ना हो, वहाँ ना हो, तब हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे. राइट. रिएक्शन नंबर थर्ड इज reaction with RSH. Yes, it is pretty much same mechanism, same hindrances, same problem. हम इसे dry HCl में carry out तो कराते हैं, but hemi-thioacetal और एक बार और कराएंगे तो it is thioacetal, है ना. But
Regeneration is not easy. Regeneration of carbonyl group is not easy. Is not easy. हमें जो भी R डैश एसिटल बना है, हमें एसिटल फिर थायासिटल, इसे HgCl2 प्लस CdCO3 एक्वस में लेना पड़ता है, जो सल्फर को जब प्रेसिपिटेट कराएंगे तभी हम ये रिएक्शन का यूज कर पाएंगे। अदरवाइज ये बड़ी अच्छी है ना, बड़ी अच्छी मतलब रेट ऑफ अटैक ऑफ RSH is faster than alcohol. Okay, but regeneration is difficult. Okay, but is still not used for masking. For masking. Due to following reason. Okay. अब ये जो बनता है एसिटल कीटल, इसके कई फायदे हैं। इसके कई फायदे हैं का क्या मतलब है? देखो, RC ये कई सारी तरह से यूज हो जाता है। SR डैश H। सबसे पहले अगर इसको अल्केन में लाना है तो रेनिनिकल हाइड्रोजन डीसल्फ्यूराइजेशन, यू विल ब्रिंग इट टू अल्केन। सल्फर अलग हटता है। It is called desulfurization. It is called desulfurization, and it is a famous reaction called Mozingo reduction. Okay. दूसरा इस रिएक्शन का हमारे पास खास काम है, ये H जो है ये एसिडिक है, राइट? तो हम अब अगर इसमें बेस डालें, if we'll put any base here, it will take this H. So ये बना लेगा RC SR डैश माइनस। अब हमें D2O में डालना है, हम RC SR डैश D बना लें। हमें एक और अल्काइल इंट्रोड्यूस करना है, हम SN2 करा लें। ओके, हमारे पास चॉइसेस है, इनसे हमारी इच्छा, हमें अल्केन में जाना है तो हम मोजिंगो में जाएं, हमें कार्बोनिल रीजनरेशन करना है तो HgCl2 प्लस CdCO3 एक्वस ले लें, वापस से एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हैं। ओके, तो सिमिलर तरीके से हम ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो ऑफ सेम पैटर्न, बट ऑफ कोर्स इट इज स्लाइटली फास्टर देन बिफोर। ये पहले से फास्टर है, ये अल्कोहल की तुलना में बेहतर यील्ड वाली रिएक्शन है। द ओनली प्रॉब्लम इज इट इज नॉट रिवर्सिबल, and when it is not reversible, I cannot use it for masking. That is the only problem with this particular method. Okay, but yes, it is very famous for Mozingo reduction के लिए बहुत famous reaction है। क्यों? क्योंकि ये वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन का ऑप्शन बनती है। अगर तुम्हें याद हो तो वुल्फ किश्नर was to be used only when the groups in the molecule are not sensitive to basic medium. Clemenson is to be used when they are not sensitive to acidic medium. But you can use Mozingo always. Neutral condition में इसका behavior हो सकता है, हम इस तरह से इसे use कर सकते हैं. Okay, that is how it can be used. Reaction number 4th is addition of ammonia and derivatives. Ammonia and derivative की reactions हम ले सकते हैं. For example, aldehyde when react with NH2G. So net reaction सबसे पहले याद कर लो इसकी. Okay, its net reaction is this H2O is gone. And this reaction is very specific in terms of pH.
pH has to be somewhere around 4.5. Not much variations. We'll get RCH, or if it is ketone, doesn't matter. यहाँ ketone allowed है. Both GI will be formed. दोनों GI यहाँ बनेंगे. Okay, same reaction. Yes, you can have core ketones also. वहाँ भी इसी तरह की reaction. pH 4.5 के आसपास. R C R dash double bond N G R dash double bond N G. Okay, this is a general reaction, but yes, अगर हम इसका mechanism करना चाहें, there is a proper mechanism for this reaction. Aldehyde plus NH2G nucleophilic attack. RCHO minus NHHG plus. Exchange. देखो रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्सिबल है. ओके, उससे क्या फायदा होगा? अगेन प्रोटोनेशन. डबल बॉन्ड NHG प्लस वाटर. अब अगर इस रिएक्शन को नेट तुम देखो तो फॉरवर्ड में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना? सो इफ इन द कंडीशन हम यहाँ पर 4.5 pH के लिए फिर से ड्राई HCl का ही यूज करेंगे. अगेन वील यूज कंडीशंस टू बी मोर अनहाइड्रस, क्योंकि अगर आप वाटर का एम्पल अमाउंट ले लोगे तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड. अगर अमोनिया का एम्पल अमाउंट है या अमोनिया डेरिवेटिव का तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, है ना? अब इस सीरीज में पूरा बहुत लंबी सीरीज है. दैट इफ यू स्टार्ट विथ अमोनिया you will get imines, that is RCR dash double bond NH. If you start with NH2 hydrazine, you will get hydrazone. You'll get hydrazone. RCR dash double bond N NH2. If you start with phenyl hydrazine, ये नाइट्रोजन ही यूज आएंगी न्यूक्लियोफिलिक. दिस इज फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, which is RCR dash double bond N NH and GI always. If you have 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-DNP, it is called Brady's reagent. Okay, इसके साथ हमारे पास बनेगा 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Two four dinitrophenyl hydrazone, which is RCR dash double bond N NH 2,4-dinitrophenyl hydrazone is formed. Now these are colored compounds. Okay, these are varied colored compounds. We have different colors of this compound, and based on this we'll have different type of reactions.
Okay, see, what I want you to is please go through this table given here in NCERT in the reactions of aldehyde and ketone. Yeah. See, here it is written that 2,4-DNP derivatives are yellow, orange, or red solids. And this 2,4-DNP is also known as Brady's reagent. So yellow, orange, or red solid, है ना? These are yellow or orange or red solid. So this reaction is used as POC for aldehyde and ketones. POC के काम आएगी ये POC of aldehyde and ketones. उसमें ये reaction काम आ सकती है हमारे लिए. Okay, there are others also. ऐसा नहीं है कि यही है addition के लिए. We have other things also. For example, if I use semi carbazine, यहाँ पर आपको semi carbazide. Okay, if you use semi carbazide, then the product is called semi carbazone. This is semi carbazide. Product is semi carbazone, which is RCR dash double bond N NHCO NH2. सेमी कार्बाजाइड से बन जाएगा सेमी कार्बाजोन. ओके, सो इस तरह से रिएक्शन पूरी अलग अलग आपने को देखने को मिलेगी. आई थिंक अभी हमने ऑक्सीम का मेंशन नहीं किया है. यस, अभी हमारा ऑक्सीम बाकी है. अगर आपने हाइड्रोक्सिलामीन का यूज करा तो यू विल गेट ऑक्सीम. ऑक्सीम इज RCR dash double bond N OH. ऑक्सीम्स आर फॉर्म्ड. ऑक्सीम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका टॉटोमर होगा HN double bond O nitroso, but these are more stable. Oximes are more stable in oximino nitroso tautomerism. Okay, they are more stable in case of tautomerism. जरूरत पड़ेगी तो हमें प्रॉपर्टीज की यूज करना पड़ सकता है इसलिए. ओके, सो दीज आर डिफरेंट केसेस. हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोट हमें लिखना चाहिए that with ammonia all forms imines, but formaldehyde, 6 moles of formaldehyde with 4 ammonia, because its nucleophilic addition is so high. Okay, ये further react करता जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, and as a result of this, कि ये आगे भी react कर सकता है, it will form something called urotropin. Okay, urotropin, which is used as urinary antiseptic. It is urinary antiseptic and it is कैसे बनाना है? 4 कोनों में नाइट्रोजन बना दो और सबको आपस में CH2 से ब्रिज करो. उसके बाद डायगोनल वालों को CH2 से ब्रिज करो. This is your urotropin. It is also called hexamethylene tetraamine. Okay, it is also called hexamethylene tetraamine. Is that clear? So मेरे ख्याल से यूरोट्रोपिन का भी जिक्र यहाँ कहीं ना कहीं है इस क्वेश्चन में. Of course, we should also add what is Schiff's base. Substituted amines. Primary amines जब रिएक्ट करते हैं ना, हमने amines का रिएक्शन अभी नहीं लिखा है. When we use primary amines, then imines are formed. These are also called Schiff's bases. बच्चों, Schiff's bases and Schiff's reagents are different. Schiff reagent अलग होता है और Schiff base अलग होता है. ये Schiff's base है,
ये शिफ्ट रिएजेंट नहीं है, शिफ्ट रिएजेंट इज एंटायरली डिफरेंट। इज इट क्लियर? वो बिल्कुल अलग है। ठीक, सो ये हुई रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कुछ नहीं बहुत सारी हैं जो तुम्हें वर्कशीट में मिलेंगी, बट फिर भी ये दो रिएक्शंस, when you heat it with ammonia you will get pyrrole। सेम वे अगर आपके पास 1,4 डायोल है और आप इसको H2SO4 में हीट कर दोगे, यू विल गेट फ्यूरन। अगर आपने इसको सल्फर में हीट कर दिया, you will get thiophene। Okay, so with different conditions we'll get different products in this reaction। Is that absolutely clear? ठीक, इस तरह से रिएक्शंस आगे बढ़ेंगे। अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। हाँ, ये बहुत ही मैं लिमिटेड टाइम के हिसाब से चल रही हूँ, तुम्हें शीट मिलेगी, तुम उसमें ज़रूर रिवाइज करना अच्छे से। और बेसिक याद रखना कि इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसका लोन पेयर का अटैक हमेशा इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, उसके हिसाब से हम आगे का प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। इज दैट करेक्ट? सो ये हुआ एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। फोर्थ इज addition of HCN, that is formation of cyanohydrin। ये बेसिकली तुमने इवन CB में देखा हुआ है ना, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जब HCN हम कहते हैं ट्रेसेस ऑफ KOH ले लो, ज़्यादा नहीं लेना है, यू शुड टेक ट्रेसेस ऑफ KOH। सो ये ट्रेसेस ऑफ KOH हमें हेल्प करता है इन फॉर्मिंग OH एंड CN। Okay, a trace of QH will help you to form this. These are cyanohydrins. These are called cyanohydrins. And the reverse of this cyanohydrin formation is an example of even CB. जब हम इससे वापस से जाते हैं, okay, then it is called even CB। Is that clear? जब हम वापस लौटेंगे इस रिएक्शन में, then it is called even CB। ठीक, इसमें कुछ खास चीजें जो तुम्हें ध्यान रखना है कि यस, अगर इसको हम हाइड्रोलाइज कर दें, अगर H3O+ दे दिया जाए, तो दिस विल बी अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को अगर हीट किया जाए विदाउट वाटर, ऑफ कोर्स वाटर के साथ नहीं, तो दे फॉर्म cyclic diesters called lactides। If they are heated like this, they form cyclic diesters, this type, called lactides। Okay, is that absolutely clear? चलो, and so on। Now एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें RCHOH और CN बनाया and they used 90% or I don't remember exactly percentage of H2SO4, and then also they took hydrolysis along with dehydration. That was a very strange question, but it is one of the past JEE questions, so I want you to remember that yes, there is a strong possibility कि ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हों, और अगर 90% इसके साथ ऐसे हीट दे दिया तो इट वाज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बनेगा। ओके, अगर आप एसिटाल्डिहाइड से इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, HCN and then hydrolysis, you get lactic acid, which is CH3CHOHCOOH। What is pyruvic acid? Is alpha keto. Pyruvic acid
is CH3COCOH. Okay, so that was addition of HCN. Sixth is addition of NHSO3. वैसे इसमें अब कोई ऐसी दिक्कत होना नहीं चाहिए अगर आपको प्रॉपर से पता हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है ना. NHSO3 is like this. It is fundamentally H2SO3 का salt है ना. It is salt of H2SO3. Now what is important to remember is attack is from sulfur, not from oxygen. In fact, the presence of this oxygen further increases the nucleophilicity of sulfur. तो इससे तो और अच्छा ही होता है. OH double bond O. Okay, and then it abstract proton intramolecular क्योंकि acidity basicity के हिसाब से this part is more acidic. So we have SO3 minus Na plus. This is white PPT. White PPT तो आप इसे POC में भी ले सकते हैं. And it can also be used for purification. It can be used for purification of aldehyde and ketone samples. है ना. इसके लिए भी काम आ सकते हैं. वापस हाइड्रोलाइज करेंगे. वी विल गेट बैक आवर ओरिजिनल aldehyde and ketone. और मेरे ख्याल से हमने ब्रॉडली मेजर सारी रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कवर करी. NaBH4 से रिडक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ओनली. ठीक. And wherever there is a formation of chiral compound, it is always in the form of racemic mixture. Aldehyde ketone plus Grignard, aldehyde ketone plus NaBH4 or LiLH4. These are all examples of nucleophilic additions. Clear? So I'll stop here for first round of nucleophilic addition reactions. ठीक, हम इसे यहाँ पर रोकते हैं. अब फिर आगे का काम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे. थैंक यू एवरीवन.